requirement. Basically about fixed capital required to the business. See, what is capital requirement? When a business entrepreneur conceive an idea of setting up a business enterprise, the commercial viability of the idea is investigated. Business entrepreneur means business owner or businessman. Whenever any businessman wish to start any business or idea of business comes into mind of that businessman, at that time it is necessary to check the financial viability of that business, practicability of that business. That means either that business is profitable or not. So all that financial requirement need to be considered before starting any business. मतलब अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का बिजनेस करने का जब आइडिया आता है कि मुझे ऐसा ऐसा बिजनेस करना है, तो वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर टेक्निकली वर्क करना पड़ेगा. बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, जैसे कि उस बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो सकता है, उस बिजनेस के लिए कितना कैपिटल लगेगा, उसे कहा जाएगा कमर्शियली वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. So you have to consider commercial viability of the business before starting the business. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to start the project. And once you are get satisfied, yes, business is profitable and commercially valuable, then you can start your project or you can start your business. म्हणजे एकदा का तुम्ही सॅटिस्फाईड झालं, तुम्ही सर्व स्टडी केलं आणि तुमच्या असं लक्षात आलं की हा जो बिझनेस आहे तो प्रॉफिटेबल आहे किंवा आपण त्या बिझनेसमध्ये खरोखरच चांगल्या प्रकारे सक्सेस मिळवू शकतो, या सर्व गोष्टीचं तुम्ही स्टडी केलं आणि ते स्टडी केल्यानंतर तुम्ही तो बिझनेस काय करू शकता, स्टार्ट करू शकता. द फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू टेक डिसिजन ऑन द अमाउंट ऑफ capital requirement to start and run the business. So you have decided to start any business, you have done detailed study of that business, and now the first important step you have to do, that is assessment of requirement of capital. How much capital you require to start the business? You need to analyze the requirement of capital. मतलब अभी आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मैं जो बिजनेस करने वाला हूँ उसमें मुझे प्रॉफिट हो सकता है, अच्छा खासा वो बिजनेस चलेगा. तो पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कितना कैपिटल लगेगा, वो आपको पहले देखना पड़ेगा. देयरफॉर फाइनेंशियल प्लान शुड बी ड्राफ्टेड कीपिंग इन माइंड present and future requirement of the business. So after deciding the requirement of capital, you need to draft financial plan, and while drafting financial plan you need to consider current requirement of the business as well as future requirement of the business. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला फायनान्शियल प्लॅन ड्राफ्ट करायचा असेल किंवा फायनान्शियल प्लॅन जेव्हा तुम्ही तयार करतील, तो प्लान तयार करत असताना आता मला किती कॅपिटलची गरज लागणार आहे, आता मला कोणकोणत्या गोष्टीची गरज लागणार आहे, त्या गोष्टी तुम्ही फायनान्शियल प्लॅन मध्ये मेन्शन करतील. त्याचबरोबर यू नीड टू कन्सिडर फ्युचर रिक्वायरमेंट ऑफ द बिझनेस ऑल्सो. म्हणजे आता काय लागणार आहे ते तर तुम्हाला त्यामध्ये इन्क्लूड करायचंच आहे, पण त्याचबरोबर फ्युचरमध्ये काय लागणार आहे, भविष्यामध्ये मला काय लागणार आहे, भविष्यामध्ये मला किती कॅपिटल लागणार आहे, ते देखील त्यामध्ये आपल्याला मेन्शन करावं लागेल, इन्क्लूड करावं लागेल. Thus, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed capital requirement and working capital requirement. We shall now discuss the capital requirement in detail. So what you have to consider here, you have to consider requirement of two types of capital. How much fixed capital you need to start the business and how much you need working capital to run the business.
मतलब जब आप लोगों ने अभी डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे बिजनेस चालू करना है, तो आपको कैपिटल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे हमें दो टाइप की जो कैपिटल है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। एक रहेगा फिक्स कैपिटल और दूसरा रहेगा वर्किंग कैपिटल। तो आपको देखना पड़ेगा कि मुझे फिक्स कैपिटल कितना लगने वाला है और वर्किंग कैपिटल कितना लगने वाला है। अभी इन दोनों के बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। आज हम देखेंगे फिक्स कैपिटल। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फिक्स कैपिटल। उसके पहले देखो, फाइनेंशियल प्लान रेफर टू असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड अरेंजिंग सोर्सेस ऑफ कैपिटल। यहाँ पे आया था फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान मीन्स assessment of required capital and sources of capital. So financial plan means assessing how much capital you required and also deciding about sources to be used to raise that capital. और फायनान्शियल प्लान म्हणजे काय की तुम्ही असेस करायचं. असेस करणे म्हणजे काय करणे, डिसाइड करणे किंवा कॅल्क्युलेट करणे. तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागेल की तुम्हाला किती कॅपिटल लागणार आहे, फिक्स कॅपिटल किती लागणार आहे, वर्किंग कॅपिटल किती लागणार आहे. यू नीड टू असेस, यू नीड टू कॅल्क्युलेट. And not only the amount of capital, you also need to consider the sources to be used to raise that capital, to collect that capital. म्हणजे फक्त किती कॅपिटल लागणार तेवढं कॅल्क्युलेट करून चालणार आहे का, नाही. तर तुम्हाला हे देखील बघावं लागणार आहे की मला लागणारं कॅपिटल मला कोणकोणत्या सोर्सेस मधून मिळणार आहे. म्हणजे ते शेअर्स मधून जमा करायचे, डिबेंचर इश्यू करून जमा करायचं, का बँकेकडनं लोन घ्यायचं, माझे स्वतःचे पैसे त्याच्यामध्ये किती इन्व्हेस्ट होणार. दॅट ऑल फॅक्टर यू नीड टू कन्सिडर इन फायनान्शियल प्लॅनिंग. नाउ सी द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कॅपिटल. Fixed capital is the capital which is used for buying fixed assets which are used for a longer period of time in the business. These assets are not meant for resale. So what is fixed capital? Capital which is used to purchase fixed assets. Fixed assets like land and building, machinery, computer, furniture, etc. All these are example of fixed asset. So whatever amount of capital you have used to purchase such fixed asset, that capital is called as a fixed capital. And all that assets you are going to use for a longer period of time. Basically, we use such assets for 10 year, 15 year or more. So fixed capital मतलब क्या, ऐसा कैपिटल जो हम फिक्स असेट परचेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. मशीनरी परचेस करना, लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करना, फर्नीचर परचेस करना, इस तरह के असेट परचेस करने के लिए जो भी कैपिटल आप इस्तेमाल करते हो उस कैपिटल को कहा जाता है फिक्स कैपिटल. These assets are not meant for resale. Of course, we purchase land and building for our business purpose and not for resale purpose. ऐसा तो नहीं होता कि आज लैंड एंड बिल्डिंग हम लोगों ने परचेज किया, कल बेच दिया. ऐसा नहीं, उसे हम फिक्स असेट नहीं कहेंगे. तो फिक्स असेट किसे कहना है, दैट वी आर गोइंग टू यूज इन बिजनेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जो हम अपने बिजनेस में लॉन्गर पीरियड के लिए इस्तेमाल करेंगे उसे कहा जाता है फिक्स असेट्स. इन सिंपल वर्ड, फिक्स कैपिटल रेफर टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स असेट्स. Acquiring means purchasing. So whatever capital you have used to purchase the fixed asset called as a fixed capital. आपण फिक्स असेट परचेस करण्यासाठी जे कॅपिटल वापरतो त्याला म्हटलं जातं फिक्स कॅपिटल. इट स्टेज इन द बिझनेस फॉर लॉंग पीरियड ऑलमोस्ट परमनंटली. And that capital remains in the business for a longer period of time, almost permanently. For example, you have purchased land and building by using capital, then that capital is called as a fixed capital, and that land and building you are going to use permanently, almost permanently. Example of fixed capital are capital used for purchasing land and building, capital used for purchasing furniture, plant and machinery, etc. So
capital used to purchase various assets, furniture, land and building, computer, etc. All such capital is called as a fixed capital. तो इन सभी कैपिटल को क्या कहा जाएगा? फिक्स कैपिटल. Such capital is required usually at the time of establishment of a new company. So, fixed capital is generally required at the time of starting the new business. But it doesn't mean that fixed capital not required after starting the business. Yes, sometimes you require fixed capital even after starting the business or even middle of the business. ऐसा नहीं है कि फिक्स कैपिटल सिर्फ शुरुआत में ही लगता है और बाद में बिल्कुल नहीं लगता. ऐसा नहीं है. फिक्स कैपिटल शुरुआत में बहुत ज्यादा लगता है, बाद में उसका जो अमाउंट है वो कम लगता है. लेकिन कभी कभी फिक्स कैपिटल हमें बाद में भी लग सकता है. However, existing companies may also need such capital for their expansion and development, replacement of equipment, etc. So here we can clearly say that fixed capital is more required at the time of starting the business, but it may also require to well-established company if that company decide to go for expansion, for diversification, or for modernization, or replacement of their old assets with new one. म्हणजे आपल्याला फिक्स कॅपिटल सुरुवातीलाच लागतं असं नाही, नंतर देखील लागू शकतं. फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं, फिक्स कॅपिटल सुरुवातीला आपल्याला जास्त लागतं, कारण की कोणताही बिझनेस जेव्हा तुम्ही स्टार्ट करणार तेव्हा तुम्हाला लँड लागणार, बिल्डिंग लागणार, मशिनरी लागणार, फर्निचर लागणार, कम्प्युटर्स लागणार अँड अदर डिफरंट इक्विपमेंट यू नीड. वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी तुम्हाला लागणार. म्हणजे तुम्हाला फिक्स कॅपिटल त्या ठिकाणी काय लागणार आहे? जास्त लागणार आहे. याचा अर्थ असा आहे का की फिक्स कॅपिटल नंतर तुम्हाला लागतच नाही? नो. You may also need fixed capital at the middle of the business if you decide to go for diversification, if you decide to go for expansion, if you decide to go for modernization, or if you decide to go for replacement of old asset with new one. म्हणजे जर तुम्ही डिसाईड केलं की मला बिझनेसचं एक्सपान्शन करायचं आहे, डायव्हर्सिफिकेशन करायचं आहे, मला माझ्या सर्व जे जुन्या मशिनरी आहेत त्या बदलायच्या आहेत, त्याच्याऐवजी मला नवीन मशिनरी आणायच्या आहेत, तेव्हा देखील तुम्हाला फिक्स कॅपिटल लागणार आहे. म्हणजे फिक्स कॅपिटल हे तुम्हाला प्रत्येक वेळी बिझनेसमध्ये लागत असतं. इनिशियल प्लॅनिंग ऑफ फिक्स कॅपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय कंपनीज प्रमोटर्स. प्रमोटर मीन्स दोज हू take initiative in starting business. They also arrange for fund required for the business. For example, you wish to start your business, then you will be called as a promoter of that business. So promoter are those people who take initiative in starting the business. मतलब जिसके माइंड में ये आइडिया आती है कि हम बिजनेस स्टार्ट करें और ऐसे 4-5 लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जो भी लोग शुरुआत में बिजनेस स्टार्ट करने को इनिशिएटिव्ह लेते हैं उन लोगों को कहा जाएगा प्रमोटर्स. म्हणजे बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी जे लोक प्रयत्न करत असतात सुरुवातीपासून स्टार्टिंगला, त्या लोकांना काय म्हटलं जातं? प्रमोटर्स. सो द फायनान्शियल प्लॅनिंग regarding requirement of fixed capital is initially done by the promoter. मतलब आपको पहले कितना फिक्स कैपिटल लगेगा वो कैलकुलेट करने का काम पहले कौन करता है? प्रमोटर्स करता है. फॉर दिस दे फर्स्ट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फिक्स असेट्स needed for the company and cost of these asset is estimated. So if you want to calculate amount of fixed capital you required to start a business, what you need? You need to list out the assets, fixed asset you need to start your business. That is, either you need land and building, factory, plant and machinery, computer, furniture, whatever fixed asset you need to list out all that assets and you need to find out the cost of each and every asset to calculate total amount of fixed capital you required. म्हणजे जर तुम्हाला फिक्स कॅपिटलची अमाऊंट काढायची असेल मग पहिलं काम काय करावं लागेल? तुम्हाला करावं लागेल ते म्हणजे तुम्हाला बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी
कोणकोणते फिक्स असेट लागणार आहेत, लँड अँड बिल्डिंग किती लागणार आहे, मशिनरीज किती लागणार आहेत, कम्प्युटर किती लागणार आहे, फर्निचर कोणतं लागणार आहे, त्या सर्वांची लिस्ट काढावी लागेल आणि त्या सर्वांची तुम्हाला जी कॉस्ट आहे, इस्टिमेटेड कॉस्ट आहे, ती तुम्हाला काढावी लागेल. आणि मग त्या सर्वांची टोटल जेव्हा आपण करणार तेव्हा आपल्याला कळेल की आपल्याला फिक्स कॅपिटल किती लागणार आहे. दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ लँड, कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, cost of plant and machinery, etc. The cost of different fixed asset is calculated and the resulting figure will be the total of fixed capital requirement of a new firm. So in this way you need to list out all assets required to start the business. You need to find out cost of all that assets and thereafter you will get total amount of fixed assets you required to start the business. तो इस तरह से आपको सारे असेट का लिस्ट निकालना है, उसका कॉस्ट निकालना है, ऑफकोर्स वो एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगा वो निकालना है. उन सब कॉस्ट का जब आप टोटल करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस को टोटल कितना फिक्स कैपिटल लगने वाला है. एन एंटरप्रेनर ऑब्टेन फंड फॉर द परचेस ऑफ फिक्स असेट्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट. एंटरप्रेनर मीन्स बिजनेसमैन. Businessman obtain, that is collect or raise fund, that is capital, from capital market. Funding can come from issue of shares, debentures, bonds or obtaining even long-term loan. So businessman first calculate amount of fixed capital required to start the business and thereafter enters to capital market to raise required capital. And he can raise that capital by using different sources like issue of shares, issue of debentures, issue of bonds or even by taking long-term loans from bank and financial institution. म्हणजे जेव्हा बिझनेस आपल्याला स्टार्ट करायचा असतो तेव्हा आपल्याला आधी बघावं लागतं की त्यासाठी किती फिक्स कॅपिटल लागणार आहे, फिक्स असेट्स कोणते लागणार आहेत आणि त्यासाठी आपल्याला किती पैसा लागणार आहे, म्हणजे फिक्स कॅपिटल किती लागणार आहे. आणि मग ते कॅपिटल आपण कॅपिटल मार्केट मधनं जमा करू शकतो. मग कॅपिटल मार्केटमध्ये वेगवेगळे सोर्सेस अवेलेबल आहेत आणि त्या सोर्सेसच्या माध्यमातून आपल्याला जेवढं फिक्स कॅपिटल पाहिजे ते आपण कलेक्ट करू शकतो, रेज करू शकतो. मग सोर्सेस कोणकोणते आहेत, इश्यू ऑफ शेअर्स, issue of debentures, issue of bonds or even you can take loan from bank or financial institution to raise a fixed capital required to start the business. Next we are going to see the factors affecting fixed capital requirement. Means the amount of fixed capital is depend on some factors. Means how much amount of fixed capital you needed, that it depend on fixed capital and that factor we are going to see. म्हणजे आपल्याला फिक्स कॅपिटल किती लागणार आहे, आपल्याला कोणत्या बिझनेस मध्ये किती फिक्स कॅपिटल लागतं ते काही फॅक्टर्स वर डिपेंड आहे आणि ते फॅक्टर आता आपण बघणार आहोत. फर्स्ट, नेचर ऑफ बिझनेस. Manufacturing industries and public utilities have to invest huge amount of fund to acquire fixed assets, while trading business may not need huge investment in fixed assets. Of course, if you are going to start manufacturing business, that you are going to start a business to manufacture some product, then you need to purchase different types of assets. It means you required large amount of fixed capital because you required more fixed assets. Or if you decide to provide public utility services like providing gas supply or providing supply of electricity. So if you are going to start any such utility services, then you need large amount of fixed capital to establish infrastructure. It means manufacturing business and public utilities business required large amount of fixed capital because they need to invest more amount in fixed assets. मतलब अगर आप किस तरह का बिजनेस करते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कैपिटल कितना लगेगा. क्या आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है,
या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का बिजनेस है तो आपको कैपिटल क्या लगने वाला है, ज्यादा, क्योंकि आपको फिक्स असेट क्या लगेंगे, ज्यादा। फिक्स असेट ज्यादा तो फिक्स कैपिटल भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। While trading business may not need huge investment in fixed capital or fixed assets. Trading business means they do not manufacture goods. They just purchase from one and sold to other. उनको कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है। वो क्या करेंगे, दूसरे ने जो तैयार किया है वो सिर्फ परचेस करेंगे और तीसरे को बेच देंगे। They do not require लार्ज नंबर ऑफ फिक्स असेट। उनको प्लांट एंड मशीनरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, या उनको जितना भी फिक्स असेट्स है वो क्या लगने वाले हैं, कम लगने वाले हैं, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू मॅन्युफॅक्चर एनी प्रोडक्ट। तो कोणत्याही प्रकारचे प्रोडक्ट तयार करत नाही, ते काय करतात, एकाने तयार केलेलं प्रोडक्ट ते परचेस करतात आणि दुसऱ्याला विकतात। कधी कधी परचेसही करत नाहीत, जस्ट कमिशन बेसिसवर काय करत असतात, काम करत असतात। म्हणजे दुसऱ्याकडनं फक्त ते घ्यायचं आणि तिसऱ्याला ते विकायचं, विकल्यानंतर त्यांना काय मिळत असतं, कमिशन मिळत असतं। सो दॅट टाइप ऑफ बिझनेस कॉल्ड एज अ ट्रेडिंग बिझनेस, अँड सच ट्रेडिंग बिझनेस रिक्वायर्ड small amount of fixed capital because they do not require to purchase large number of fixed asset. उनको ज्यादा फिक्स असेट्स परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। So, which type of business required large amount of fixed capital? Manufacturing business and business providing public utilities services required large amount of fixed capital, while trading business required smaller amount of fixed capital as compared to manufacturing industries and public utilities industries. Second is size of business. Where a business firm is set up to carry on large-scale operations, its fixed capital requirements are likely to be high. It is because most of their production processes are based on automatic machines and equipment. It is simple that if the size of business is large, you require large number of fixed assets and you require large amount of fixed capital. It basically, in a large business organization, they go for automation, means robotic machineries or computerized machineries, and that type of machineries are very costly, and therefore such business required large amount of fixed capital. So size of business also affect requirement of fixed capital. If your business size is small, you require small amount of fixed capital. If your business size is large, then you require large amount of fixed capital. आपके बिजनेस का साइज कितना है उसके ऊपर फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है। अगर आपके बिजनेस का साइज ज्यादा है, बड़ा है, तो आपको फिक्स कैपिटल भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। भाई, क्योंकि बड़े बिजनेस में ज्यादातर जो भी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है वो ऑटोमेटिक रहती है, कंप्यूटराइज रहती है या रोबोटिक रहती है, और ऐसे मशीनरी के लिए आपको पैसा भी ज्यादा देना पड़ता है, तो उसमें फिक्स कैपिटल क्या लगेगा, ज्यादा। और अगर आपका बिजनेस का साइज कम है, साइज ऑफ द बिजनेस इज स्मॉल, तो आपको फिक्स असेट क्या लगेंगे, कम। फिक्स असेट कम लगेंगे, इसका मतलब आपको फिक्स कैपिटल भी क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है। थर्ड इज स्कोप ऑफ बिजनेस। देयर आर बिजनेस फर्म विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल। सच बिजनेस वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। हियर स्कोप ऑफ बिजनेस मीन्स geographical area that your business want to capture through your production and distribution system. If your business want to capture only local market, then you need to do smaller amount of production. But if your business want to capture international market, national market, then you need to do higher amount of production or more production. And to carry out that higher amount of production, you require more number of fixed assets, machineries, plant and other fixed assets. And also you need to make your distribution system more stronger.
So, scope of business also affect requirement of fixed capital. Next is scope of business. There are business firms which are formed to carry on production or distribution on a large scale. Such business would require more amount of fixed capital. If you decide to carry on production on a large scale, it means you want to capture not only local market but also national market and sometime international market. It means you need to do more production. You need to make your distribution system more stronger. And if you want to do more production, then you require more number of fixed asset. It means you require more fixed capital. So, the amount of fixed capital also depends on scope of business. Either you are going to make large scale production or small scale production. मतलब आपको जो कैपिटल लगने वाला है फिक्स कैपिटल वो दूसरा डिपेंड करता है स्कोप ऑफ बिजनेस के ऊपर. आप किस तरह से प्रोडक्शन करने वाले हैं. प्रोडक्शन आपका लार्ज स्केल में होने वाला है या स्मॉल स्केल में होने वाला है, उसके ऊपर भी फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है. क्योंकि अगर आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने वाले हैं तो आपको फिक्स असेट क्या लगने वाले हैं, ज्यादा. और फिक्स असेट अगर ज्यादा लगेंगे तो फिक्स कैपिटल क्या लगेगा, ज्यादा. और अगर आप डिसाइड करते हैं कि हमें सिर्फ लोकल मार्केट तक ही सीमित रहना है तो आपको प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या रखना पड़ेगा, लिमिटेड रखना पड़ेगा. तो ऐसे केस में आपको लगने वाला जो फिक्स कैपिटल है वो क्या लगेगा, कम लगेगा. फोर्थ इज एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट. If entrepreneur decide to acquire assets on lease or on rental basis, less amount of fund for fixed asset will be needed for the business. First here we need to understand the meaning of lease. It is a contract by which one person grants permission of some of his property, especially land, building or machinery, to another for a certain period of time. So lease is one contract whereby one person give possession of his assets like land and building, machinery, furniture, etc. to other person for certain period of time against some fees. That type of contract is called as a lease. मग लीज हा एक असा कॉन्ट्रॅक्ट असतो त्याच्यामध्ये एखादा व्यक्ती काय करतो, त्याच्याकडे असलेली लँड अँड बिल्डिंग असेल, मशिनरी असेल, फर्निचर असेल किंवा इतर फिक्स असेट दुसऱ्या व्यक्तीला वापरायला देतो आणि त्याचा जो कॉन्ट्रॅक्ट तयार केला जातो त्याला म्हटलं जातं लीज. म्हणजे हे रेंटल बेसिस सारखंच असतं. सो इफ बिझनेसमन डिसाइड टू टेक असेट्स ऑन लीज बेसिस और ऑन रेंटल बेसिस, इट मीन्स दैट बिजनेसमैन नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ फिक्स असेट. तो अगर बिजनेसमैन ने डिसाइड किया कि हम ज्यादा से ज्यादा असेट लीज पे ले लेंगे, रेंटल पे ले लेंगे, डायरेक्टली खरीदी नहीं करेंगे, डायरेक्टली परचेज नहीं करेंगे, तो ऐसे बिजनेस को या ऐसे बिजनेसमैन को फिक्स कैपिटल की जरूरत भी क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी. बिकॉज दैट बिजनेसमैन इज नॉट गोइंग टू परचेज असेट्स परमानेंटली. वो डायरेक्टली परमानेंटली परचेज करने जा रहा है क्या, नहीं, वो रेंटल बेसिस पे लेने वाला है, लीज पे लेने वाला है. तो ऐसे केस में हमें फिक्स असेट के लिए पैसा क्या लगेगा, कम लगेगा. फिफ्थ वन, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट. इफ द बिजनेस वांट टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर्स, लिमिटेड असेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन. इट वुड मिनिमाइज द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ business. It means if business decides to give contract of their production to other company, then that type of business required less number of fixed assets and thereby they required less amount of fixed capital, because that business is not going to carry out entire production in their own factory. They have given contract to other company to carry out production. So that type of arrangement is called as a subcontract.
म्हणजे आपण हे सब कॉन्ट्रॅक्ट अनेक वेळा बघू शकतो. तुम्ही साधं पार्ले बिस्किटचं बॉक्स बघा, पार्ले बिस्किट घ्या आणि त्याच्या मागे बघा, त्या पार्ले बिस्किटचं जे बॉक्स असेल त्याच्या मागे पॅकिंग असेल, त्या पॅकिंगच्या मागे बघा मार्केटेड बाय काय असतं, पार्ले असतं, पण त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग बघा वेगवेगळ्या कंपनीमध्ये झालेलं असतं. सूर्या कंपनी असेल, वेगवेगळ्या कंपनीमध्ये झालेलं असतं. म्हणजे सर्व बिस्किट काय पार्ले कंपनी तयार करते का? तयार करत नाही. मग ही पार्ले कंपनी काय करते, त्यांच्या प्रोडक्शनचं जे कॉन्ट्रॅक्ट आहे ते दुसऱ्या कंपनीला देते. मग ती दुसरी कंपनी पार्ले बिस्किट तयार करून देते आणि मग पार्ले कंपनी त्याला आपलं पॅकिंग लावते आणि आपल्याला विकत असते. म्हणजे त्यामुळे काय झालं, पार्ले कंपनीला फिक्स असेट जास्त परचेस करण्याची गरज पडली नाही. म्हणजे त्याला फिक्स कॅपिटल काय लागणार आहे, कमी. सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट कॅन बी डन बाय बिझनेस टू अवॉइड हेवी इन्व्हेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स. म्हणजे जर आपल्याला जास्त इन्व्हेस्टमेंट करायची नसेल फिक्स असेटमध्ये किंवा फिक्स कॅपिटल आपल्याकडे जास्त नसेल, मग आपण काय करू शकतो, बिझनेस स्टार्ट करायचा आणि आपल्याला जे प्रोडक्ट पाहिजे त्याचा कॉन्ट्रॅक्ट आपण दुसऱ्या कंपनीला द्यायचं, दुसऱ्या कंपनीकडनं ते प्रोडक्ट आपण तयार करून घ्यायचं, त्याच्यावर आपलं लेबल लावायचं, आपली पॅकिंग करायची आणि मार्केटमध्ये विकायचं. अशा प्रकारची जी अरेंजमेंट केली जाते त्याला म्हटलं जातं सब कॉन्ट्रॅक्ट. अँड इफ यू गो फॉर सब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, योर नीड फॉर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी रिड्यूस. तो अगर आप सब कॉन्ट्रैक्ट देते हो, आपके प्रोडक्शन का काम क्या होने वाला है, कम होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है. तो ऑफकोर्स आपको फिक्स असेट भी क्या लगेंगे, कम. और अगर आपको फिक्स असेट कम लगते हैं, इसका ही मतलब आपको लगने वाला फिक्स कैपिटल भी क्या लगेगा, कम. तो इस तरह से सब कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके बिजनेस में ज्यादा है तो फिक्स कैपिटल का अमाउंट कम लगेगा. अगर आपके बिजनेस में सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिक्स कैपिटल का अमाउंट क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा. 6 is acquisition of old asset. Acquisition means purchase of old asset. If old equipments and plants are available at low prices, then it will reduce the need for investment in fixed asset. It means if you decide, your business has decided to purchase old assets instead of new one, then requirement of fixed capital will be reduced. तो अगर आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम नए असेट परचेस नहीं करेंगे, मार्केट में हमें ओल्ड असेट अवेलेबल है वो हम परचेस करेंगे, तो ऑफकोर्स अगर वो ओल्ड है तो उनका कॉस्ट भी क्या रहेगा, कम. तो अगर आप ओल्ड असेट परचेस करते हो तो आपको फिक्स कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है. एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट. With the view to foster industrial growth at regional level, the government may provide land and building materials at concessional rate. Plant and equipments may also be made available on installment basis. Such facilities will reduce the requirement of fixed assets. Foster means to give encouragement. Government encourage to establishment of business in rural area, and if you want to start your business in rural area, then government provide different type of concession while purchasing different type of fixed assets like land and building, plant and machinery, material, etc. Government give concession on payment of taxes also to give encouragement to establishment of business in rural area. तो अगर आप रूरल एरिया में बिजनेस करना चाहते हो या किसी पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस करना चाहते हो, तो सम टाइम गवर्नमेंट का पॉलिसी रहती है कि अगर आप इस एरिया में बिजनेस करते हो तो हम इस तरह का आपको कंसेशन देंगे. तो अगर आप ऐसा कोई बिजनेस करते हो और गवर्नमेंट का वहां पे आपको कंसेशन मिलता है लैंड परचेस करने में, मशीनरी परचेस करने में, मटेरियल परचेस करने में, तो आपको फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या लगेगा, कम लगेगा. गवर्नमेंट का कंसेशन अगर नहीं मिलेगा तो रिक्वायरमेंट क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा. ऑल्सो समटाइम्स सच असेट्स मे बी अवेलेबल ऑन इन्स्टॉलमेंट बेसिस. तर कधी कधी अशा प्रकारचे असेट्स आपल्याला इन्स्टॉलमेंटवर देखील उपलब्ध होतात, मिळत असतात. आणि मग जर आपल्याला हे इन्स्टॉलमेंटवर मिळाल्या तर टोटल फिक्स कॅपिटल ऍट अ टाइम
आपल्याला काय लागणार आहे, कमी लागणार आहे. म्हणजे एकदाच आपल्याला फिक्स कॅपिटल लागणार नाही, तर ते प्रत्येक महिन्याला आपल्याला इन्स्टॉलमेंट भरावं लागणार आहे. म्हणजे ऍट अ टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कॅपिटल विल बी रिड्यूस. Next is international condition. This factor is very significant, particularly in a large organization carrying business on international level. So international condition also affect requirement of fixed capital, basically for those business which are engaged at international level. ऐसे बिजनेस जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं उसके लिए इंटरनेशनल कंडीशन भी एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर फिक्स कैपिटल का अमाउंट डिपेंड करता है. सी व्हाट इज गिवन. फॉर एग्जांपल, कंपनीज एक्सपेक्टिंग वॉर may decide to invest large funds to expand fixed assets before there is shortage of material. It means if company expect war between any two countries or two or more countries, then that company may expand their fixed assets to increase production before shortage of raw material, because once war started there will be the shortage of raw material. मतलब क्या कि अगर कंपनी को लगता है कि किसी दो कंट्री में या दो से ज्यादा कंट्री में वार हो सकता है, तो उसके पहले ही वो कंपनी क्या करेगी, अपने बिजनेस का एक्सपांशन करेगी. अभी कंपनी क्यों एक्सपांशन करेगी? देखो, अगर किसी दो या दो से ज्यादा कंट्री में वार होता है तो ओवरऑल रॉ मटेरियल का सप्लाई क्या होने वाला है, कम होने वाला है. तो ऐसे केस में कंपनी क्या सोचेगी, रॉ मटेरियल का सप्लाई कम होने से पहले ही, मतलब वार होने से पहले ही अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करके रखेंगे तो बाद में वार होने के बाद वो प्रोडक्ट हम मार्केट में ज्यादा प्राइस पे बेच सकेंगे. तो अगर ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फिक्स असेट परचेज करने पड़ेंगे, फिक्स असेट का एक्सपांशन करना पड़ेगा. और ऐसे केस में आपको फिक्स कैपिटल क्या लग सकता है, ज्यादा लग सकता है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल कंडीशन के ऊपर फिक्स कैपिटल डिपेंड करता है. कुछ चीजों के लिए या कुछ बिजनेस के लिए इंटरनेशनल कंडीशंस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल. 9th is trend in economy. If the future of the company is anticipated to be bright, it gives green signal to business entrepreneur to carry out all sort of expansion of business firm. In that case, large amount of funds are invested in fixed asset so as to reap the benefit in future. It means if you anticipated that our company has a bright future, then you may invest large amount in fixed asset to expand your business. म्हणजे जर तुम्हाला असं वाटत असेल किंवा तुम्हाला असं अँटिसिपेट केलं असेल, तुम्ही असा अंदाज लावला असेल की आता आपल्या बिझनेसला फ्युचरमध्ये आणखी चांगल्या प्रकारे मार्केट मिळणार आहे, चांगल्या प्रकारे डिमांड येणार आहे, असं जर तुम्हाला आता वाटलं तर तुम्ही तुमचा बिझनेस आता काय करणार आहेत, एक्सपांड करणार आहेत. तुम्ही जास्त बिझनेसमध्ये फिक्स असेट्स आणणार आहेत. जस्ट फॉर एन एक्झाम्पल, आता कोरोनाचं जर आपण एक्झाम्पल बघितलं, कोरोनावर अजून देखील वॅक्सिन आलेली नाही. मग आपण लोक काय करतो, सोशल डिस्टन्सिंग आपण फॉलो करतो. त्याचबरोबर काय केलं जातं, पर्सनल हायजीन कडे किंवा पर्सनल जे क्लिनलीनेस आहे त्याच्याकडे आपण आता जास्त लक्ष देतो. म्हणजे प्रत्येक वेळी हात धुणे, सॅनिटायझेशन करणे, या सर्व गोष्टी आपण करत असतो. मग आता बघा, जरी वॅक्सिन आली तरी कोरोना जाणार आहे का, कोरोना जाणार नाही, कोरोना राहणारच आहे. मग आपल्याला पर्सनल हायजीन ही करायचीच आहे. म्हणजे सॅनिटायझेशन करायचं असेल, हँडवॉश असेल, साबण असेल, ह्या सर्व इंडस्ट्री आता काय असणार आहेत, डिमांडमध्ये असणार आहेत. त्यांचं डिमांड कमी होणार आहे का, नाही. मग ह्या कंपन्यांना माहिती आहे की आता आपल्या प्रोडक्टचा डिमांड कमी होणार नाही, उलट तो वाढतच जाणार आहे. त्यांचे जे प्रोडक्ट आहेत ते जास्तीत जास्त संपलेच जाणार आहेत, त्यांना माहिती आहे. मग अशा कंपन्या काय करणार आहेत, प्रोडक्शन इन्क्रीज करण्यासाठी, प्रोडक्शन वाढवण्यासाठी त्यांच्या बिझनेसचं काय करणार, एक्सपान्शन करणार. जास्तीत जास्त फिक्स असेट ते परचेस करतील.
कारण की त्यांना माहिती आहे की त्यांचं फ्युचर काय आहे, ब्राईट आहे. फ्युचरमध्ये आणखी अशा प्रकारचे आजार येतच जाणार आहेत आणि आणखी अशा प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला लागणारच आहेत. मग अशा प्रकारच्या ज्या कंपन्या आहेत, दोज हू एंटिसिपेटेड ब्राईट फ्युचर may make huge investment in fixed assets. 10th is population trend. When the population is increasing at high rate, certain manufacturers find this as an opportunity to expand business. For example, automobile industry, electronic goods manufacturing industry, ready-made garment, etc., which necessitate huge amount of fixed capital. There is a simple relation between population and overall demand for the goods and services. If population increases, the demand for goods and services also increases. तो अगर पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा तो गुड्स और सर्विसेज का डिमांड भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा. एंड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट डिमांड, कंपनी नीड टू डू मोर प्रोडक्शन. तो अगर आपको डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको कंपनी का प्रोडक्शन जो है वो भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. एंड टू इंक्रीज दैट प्रोडक्शन यू नीड टू परचेस मोर फिक्स असेट्स. तो अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो फिक्स असेट भी आपको ज्यादा परचेस करने पड़ेंगे. इट मीन्स यू रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल. तो आपको कैपिटल भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा. देखो ये सर्कल कैसे है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इसका मतलब आपको प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा. अगर आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा तो आपको फिक्स असेट क्या लगेंगे, ज्यादा. फिक्स असेट ज्यादा लगेंगे, इसका ही मतलब आपको फिक्स कैपिटल भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा. सो देयर इज सिंपल रिलेशन, हायर विल बी द इंक्रीज रेट ऑफ पॉपुलेशन, हायर विल बी द नीड ऑफ फिक्स कैपिटल. जैसे जैसे पॉपुलेशन का रेट है वो इंक्रीज होते जाएगा, आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत भी क्या पड़ती जाएगी, ज्यादा पड़ती जाएगी, क्योंकि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मोबाइल इंडस्ट्रीज लाइक मोबाइल, टेलीविजन और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज, उनका डिमांड क्या होने वाला है, दिन ब दिन बढ़ते जाने वाला है. क्यों बढ़ते जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है. अगर पॉपुलेशन बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा. 11th, कंज्यूमर प्रिफरेंस. इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन गुड डिमांड विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल. So, some goods or services having good demand or large demand from the consumer. And if your product having good demand from consumer or your product is preferred by the consumer, then you need to do more production of your goods or of your services. And to do more production of your goods or services, you need more number of assets and thereby you require large amount of fixed capital. म्हणजे तुमचं जे प्रोडक्ट आहे त्याला कंझ्युमरचं डिमांड किती आहे, कंझ्युमरचं प्रिफरन्स किती आहे, त्याच्यावर तुमच्या प्रोडक्ट, तुमच्या बिझनेसला किती कॅपिटल लागणार आहे ते डिपेंड करतं. म्हणजे तुमच्या प्रोडक्टला जर कंझ्युमरचं डिमांड जास्त असेल, प्रिफरन्स जास्त असेल, तर तुम्हाला त्याचं प्रोडक्शन काय करावं लागणार आहे, इन्क्रीज करावं लागणार आहे. मग जर प्रोडक्शन इन्क्रीज करावं लागणार असेल तर तुम्हाला फिक्स असेट जास्त लागतील आणि जर फिक्स असेट जास्त लागणार असतील याचाच अर्थ तुम्हाला फिक्स कॅपिटल पण काय लागणार आहे, जास्त लागणार आहे. सो कंज्युमर प्रिफरन्स ऑल्सो अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कॅपिटल. फॉर एक्झाम्पल, मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरर्स एज वेल एज मोबाईल नेटवर्क प्रोवायडर. वी नो दॅट there is good demand for mobile phone as well as mobile network provider nowadays. अभी हम देख सकते हैं मोबाइल फोन को एक अच्छा डिमांड है, एलईडी टीवी को अच्छा डिमांड है, या जो मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं या इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं उनको भी अच्छा डिमांड है. तो इनका डिमांड क्या हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है. अगर वो डिमांड बढ़ते जा रहा है तो इन कंपनी को उनका प्रोडक्शन भी क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है.
और अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, इसका मतलब आपको फिक्स असेट क्या लगेंगे, ज्यादा। और अगर आपको फिक्स असेट ज्यादा लगेंगे, इसका ही मतलब आपको फिक्स कैपिटल भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। 12th is competitive factor. This factor is a prime element in decision making regarding fixed capital requirement. If one of the competitors shifts to automation, the other companies in the same line of activity will be compelled to follow that competitor. See, competitor factor indirectly affect requirement of fixed capital, because if our competitor decides to go for automation, decides to go for modernization, decides to go for computerization, then it compels us to go for automation, go for modernization or to adopt new technology. मतलब अगर हमारा कंपटीटर डिसाइड करता है कि वो ऑटोमेशन करेगा, कंप्यूटराइजेशन करेगा, नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा, अगर वो इस्तेमाल करता है तो हमें भी नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या होगा कि अगर हम लोगों ने पुराना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया और हमारा कंपटीटर नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा, तो क्या होने वाला है, उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो फास्ट होगा और हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या रहेगा, कम रहेगा। उसके प्रोडक्ट का क्वालिटी ज्यादा बेहतर आएगा क्योंकि वो ऑटोमेशन में जाएगा, मॉडर्नाइजेशन करेगा, न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। तो ऐसे केस में हम उसके पीछे रह सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर वो नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है तो हमें भी नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो इफ कंपटीटर शिफ्ट टुवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी, देन इट कंपेल्स अस to adopt new technology. At that time we required more amount of capital. म्हणजे आपला कंपटीटरने जर नवीन टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट केली तर आपल्याला पण नवीन टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट करावी लागते आणि ती कंपल्सरी करावी लागते। जर त्यांनी केली आणि आपण जर नवीन टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट केली नाही, वापरली नाही, तर काय होणार, आपण मागे पडणार आणि त्याची प्रोडक्शन प्रोसेस ही जास्त फास्ट होईल, जास्त चांगल्या प्रकारे होईल आणि मग आपण त्याला कॉम्पिटिशन करू शकणार नाही। सो दिस फॅक्टर ऑल्सो अफेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कॅपिटल।